Hello everyone, welcome back to Edunist. This is set number 13 for commonly used Urdu to English sentences, and in this lecture we are going to do listening practice, translation and some very important phrases. और गौर से सुनिएगा, ठीक है? आपको हर सेंटेंस में कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, ओके? एंड वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर, ये सिर्फ और सिर्फ सेंटेंसेस नहीं हैं, आप इन सेंटेंसेस को फ्रेजेस समझिए, ठीक है? और इनको डिफरेंट सिचुएशंस में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? हल्की सी चेंजेस के साथ आप इन सेंटेंसेस को बाकी डिफरेंट सिचुएशंस में भी यूज कर पाएंगे, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज लेक्चर. लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे तमाम लेक्चर्स वीडियोस टाइम पर मिले, और इसके साथ साथ बेल बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की तरफ से नोटिफिकेशंस रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें, ओके? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू रियली वांट टू improve your language, so subscribe the channel and click the bell button now. So here we have the very first sentence. यहाँ पर पूरा सेंटेंस तो है dinner is on me today. Dinner is on me today. लेकिन इसमें एक पार्ट है on me, okay? यानी अगर आप किसी खाने के लिए पे करने वाले हैं तो आप कहेंगे this is on me, dinner is on me, lunch is on me, okay? यानी अगर आप सिंपली पे करने वाले हैं किसी भी खाने के लिए तो आप उसके लिए कह सकते हैं on me, यानी इसका बिल मैं पे करने वाला हूं, राइट? सो आज रात का खाना मुझ पर रहा, right? Dinner is on me today. Okay, so here we have another sentence. This phone comes in 5 colors. Comes in, यहाँ पर जो phrasal verb है comes in, ये important है सबसे ज़्यादा. So comes in का मतलब है कि अगर कोई product, कोई भी चीज़ वो मतलब मुख्तलिफ कलर्स में आती है, ठीक है, मुख्तलिफ साइजेस में आती है, राइट? सो आप कह सकते हैं कि दिस थिंग कम्स इन फॉर एग्जाम्पल स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज साइज, ओके? एंड दिस शर्ट कम्स इन एक्स्ट्रा लार्ज साइज ओनली, ओके? लाइक यू कैन से दिस लैपटॉप comes in 2 different sizes. The first one is 15 inches and the second one is 17 inches. Right? So this is the way you can use comes in. This phone comes in 5 different colors. Okay? So this is the way we can use comes in. Okay? Alright, so here we have another sentence. I've made. I've. By the way, contractions are very important to learn. अगर आपको सही तरह से contractions का आइडिया नहीं है तो आप सिंपली ये ऊपर जो लिंक मैंने दे रखा है इस पर क्लिक करके मजीद contractions जो कि एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है contractions पर, आप वो वीडियो देख सकते हैं और contractions को अच्छी तरह से सीख सकते हैं. So I've made up my mind to sell this house. I've made up my mind. Made up my mind. Okay? Made up my mind. अलग अलग नहीं कहें, इकट्ठा फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए आप कह लें I've made up my mind, okay? To sell this house. I've made up my mind to sell this house. Okay. Well, this sentence is commonly used. I've made up. इसका मतलब है कि मैंने फैसला कर लिया है, okay? यानी made up, make up my mind. I will make up my mind. मैं इस पर फैसला करूंगा बाद में, ठीक है? I will make up my mind. ठीक है? आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं. वैसे make up my mind ये नॉर्मल इसकी जो मतलब नॉर्मल इसका वर्ड है वो make up my mind है, लेकिन आप इसको पास्ट में कह सकते हैं I have made up my mind to sell this house. Okay? मैंने ये घर बेचने का फैसला कर लिया है. Okay, so I'm about to do it. About to. जब आप कुछ करने वाले होते हैं, मैं करने लगा हूँ, मैं करने वाला हूँ, right? उसके लिए
आप यूज कर सकते हैं about to. I am about to go. I am about to leave now. Okay? The office is about to close. मैं ये करने लगा हूँ, ऑफिस बंद होने वाला है. Okay? मैं बस जाने लगा हूँ. Okay? So there are different sentences that you can make using about to. I am about to. Okay? About to एक बहुत ही commonly use होने वाला structure है. So इसको आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर यूज कर सकते हैं. So I'm about to do it. Right. So I am on my way. On my way. On my way ये भी एक commonly use होने वाला structure है. Okay. So आपसे अगर कोई पूछता है कि कहाँ पहुंचे हो भाई, We are waiting for you. Where are you? So हम कह सकते हैं I am on my way. We are on our way. Okay? So this is the way we can say it. I am on my way. यानी जब आप रास्ते में हैं. Okay? So you can say I am on my way. On my way. Okay? यानी जब आप थोड़ा सा quickly pronounce करेंगे तो आप इसको क्या बोलेंगे? My way. My way. Right? So this is the way you can pronounce it like native English speakers. Right? Okay. So I'll be late. I'm stuck in traffic. I'm को वैसे हम क्या बोल सकते हैं? I am. वैसे तो ये अलग अलग है लेकिन contraction में I'm. Okay? I'm stuck in traffic. So stuck in traffic यानी आप traffic में फंस गए हैं. I'll be late. I'm stuck in traffic. So this is the way you can say it. Stuck in traffic यानी traffic में फंस जाने को आप कह सकते हैं stuck in traffic. Okay? I'll be late. I'm stuck in traffic. Right. He has gone for the day. He has gone for the day. देखिए इसकी एक सिचुएशन बना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऑफिस में कॉल करते हैं और कहते हैं कि मुझे एग्जाम्स के मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए. सो कैन आई टॉक विद द एग्जामिनर प्लीज. आपको आगे से जवाब मिलेगा. अगर वो वहां पर नहीं है, वो छुट्टी पर है, तो वो एग्जामिनर के बारे में क्या कहेंगे? रिसेप्शनिस्ट यानी जो कॉल पर उन्होंने बंदा बिठा रखा है. ओके उसको वो क्या कहेंगे? लाइक ही हैज गॉन फॉर द डे. द एग्जामिनर हैज गॉन फॉर द डे. ओके यू कैन कॉल टुमारो. आप कल कॉल कर लीजिए. एग्जामिनर आज नहीं आने वाले हैं, वो आज अवेलेबल नहीं है, वो आज यहाँ पर नहीं है. सो कैन यू प्लीज कॉल टुमारो. सो दिस इज द वे यू कैन यूज इट. ही हैज गॉन फॉर द डे. ओके आप कोई फ्रेंचाइज विजिट करते हैं, कोई ऑफिस विजिट करते हैं और आप किसी शख्स को मिलना चाहते हैं वहां पर, और आप रिसेप्शन पर पूछते हैं कि मुझे फलां शख्स से मिलना है. ओके और आपको आगे से जवाब मिलता है कि ही हैज गॉन फॉर द डे. तो आप समझ जाइए कि आप आज कम से कम उससे नहीं मिल सकते हैं क्योंकि आज वो वहां पर है ही नहीं. Right? So he has gone for the day. It's quite important, by the way. Okay. Well, I didn't mean that. I didn't mean that. Another important sentence. By the way, मैं क्यों कह रहा हूँ सब important हैं, इसलिए हर किसी के साथ मैं बार बार कह रहा हूँ कि सभी important है. So गौर कीजिए, सभी को याद करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए. Okay? ये अपनी जो लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन है, उसका हिस्सा बनाइए इन वर्ड्स को. ये आम तौर पर यूज होने वाले हैं. इवन इनको उर्दू के साथ यूज किया जाता है. आई डिडंट मीन दैट. मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था. राइट? सो मेरा ये मतलब नहीं था. आई डिडंट मीन दैट. ओके सो दिस इज द वे वी कैन यूज इट. आई डिडंट मीन दैट. या ओके सो ऐसी सिचुएशंस होती हैं हम जब लोगों को कहना चाह रहे थे कि मुझसे जो हुआ मेरा ये कतई मतलब नहीं था. ठीक है? आई डिडंट मीन दैट. मेरा ये मतलब नहीं था. राइट. सो फॉर सो गुड. सो फॉर सो गुड. अभी तक सब ठीक ठाक चल रहा है. ओके अभी तक सब ठीक चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है. आपसे कॉल करके कोई पूछता है, आपका रिलेटिव, हाँ जी कंस्ट्रक्शन कैसी जा रही है आपके घर की. सो यू कैन से सो फार सो गुड.
So far so good. Right? आपके एग्जाम्स की तैयारी कैसी जा रही है? So far so good. Okay? यानी अभी तक तो ठीक जा रही है, अभी तक सब ठीक ठाक चल रहा है, सब ठीक जा रहा है. Okay? So this is the way you can use it. So far so good. Yeah. Okay, so far so good. That sounds good, beautiful, expensive, bad. और यहाँ पर आप बहुत सारे adjectives यूज कर सकते हैं. That sounds. अब that sounds ये आप कब यूज करेंगे? जब आप बताना चाह रहे हैं कि आपको कोई चीज कैसी लगी है. आपको बता दिया जाता है एक फॉर एग्जाम्पल एक जूते का रेट. ठीक है, आपको प्राइस बताई जाती है, ये जूता है 12,000 रुपए का. Oh, that sounds expensive. Okay. Well, we are going to Naran and Kagan for a tour. Okay. Ah, that sounds beautiful. You know, that's a beautiful place to visit. Okay. So, your son comes and he says, like, I have got third position or second position. Okay. So you can say, oh, that sounds great. That sounds good. Okay. So this is the way you can use this particular expression. I hope you liked today's lesson very much, and inshallah I'll bring some more expressions and phrases for you. So if you liked my video and the way I am helping you learn everyday conversations, so please like my video and also comment below for your suggestions, for your precious feedback, and also consider subscribing my YouTube channel and click the bell button too. Take care. Bye for now.